Assalamu alaikum. Our today's lecture is about past perfect tense. Past perfect tense mean work has completed or work has completely done in the time period of past. इसका मतलब ये है कि ऐसा ज़माना जिसमें काम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, यानी हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, उस ज़माने को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है। Let's see what would be structure of sentences of past perfect tense. First of all, subject is added, and with every subject there is addition of had. After it there is use of third form of verb, and in the end of sentences there is addition of object. For example, Ali had gone to school. Ali subject had. This sentence is obviously of past perfect tense, so there is use of had in past perfect tenses. Had is used in past perfect tenses, and gone is third form of verb. The original form of verb is go, and its second form is went, and third form of go is gone. And school is object at which Ali has completed its work. Let's see few examples to understand the structure of sentences of past perfect tense. Alia had cooked food. Children had eaten rice. She had washed clothes. Girls had cooked food. Police had caught the thieves. These are the examples of simple sentences of past perfect tense. In past perfect tense, there is just use of had, either pronouns are he, she, it, I, we, they and you. अगर प्रोनाउंस ही है, शी है, इट है, दे है, यू है, आई है, तो हर सूरत में सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। ये सादा फ़िक्रात की एग्जांपल्स हैं, इनको आप अच्छी तरह लर्न करें और इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैड लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, फिर सेंटेंस के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा जिस पर सब्जेक्ट जो है वो अपना वर्क कंप्लीट करता है। When there is use of no or not in sentences, obviously these sentences are called negative sentences of that tense. ऐसे sentences जिसमें नफ़ी का इस्तेमाल हो, no या not का इस्तेमाल हो, तो वो sentences जो होते हैं वो मनफी फ़िक्रात कहलाते हैं। Let's see what would be structure of negative sentences of past perfect tense. Ali had not gone to school. This example reveals that Ali is subject and use of had not, gone third form of verb, and in the end of sentence there is use of object and object is school. इस फिक्रे में अली जो है वो सब्जेक्ट है, हैड नॉट यूज़ है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है या मनफी फ़िक्रा है, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लग रही है और सेंटेंस के आखिर में देयर इज़ यूज़ ऑफ या इस्तेमाल हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो स्कूल है। लेट्स सी अदर एग्जांपल्स। गर्ल्स हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, शी हैड नॉट कुक्ड फूड, पुलिस हैड नॉट कॉट द थीफ, एट्सेट्रा। ये तमाम एग्जाम्पल जो हैं वो रिवील्स करती हैं कि सब्जेक्ट लगेगा, देन देयर इज़ यूज़ ऑफ हैड, देन देयर यूज़ आफ्टर यूज़ ऑफ हैड देयर इज़ यूज़ ऑफ नॉट, and after the use of not there is use of third form of verb, and in the end of sentence there is use of object at which obviously subject has completed its work. When there is use of not and also the sentences are interrogative, let's see what would be structure of sentences of past perfect tense. ऐसे फ़िक्रात जिसमें नहीं का भी इस्तेमाल हो, नो या नॉट भी लगे और वो सवालिया भी हों, तो देखते हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा। मिसाल के तौर पे, क्या लड़कियां कपड़े नहीं धो चुकी हैं? हैड गर्ल्स नॉट वॉश्ड क्लोथ्स? क्या बच्चे स्कूल नहीं जा चुके हैं? हैड चिल्ड्रन नॉट गॉन टू स्कूल?
क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी है? हैड पुलिस नॉट कॉट द थीफ? क्या लड़कियां खाना नहीं पका चुकी हैं? हैड द गर्ल्स नॉट कुक्ड फूड? क्या तुम चावल नहीं खा चुके हो? हैड यू नॉट ईटन राइस वगैरह एट्सट्रा। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हैड लग जाएगा, फिर उसके बाद यूज़ ऑफ प्रोनाउन या सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, देन यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंस देयर इज़ यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। हैड, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंस देयर इज़ यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर वॉच करने के बाद आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड about sentences or structure of sentences of past perfect tense. Thank you for watching and when somebody asks question in sentences, these sentences are definitely called interrogative sentences. And in interrogative sentences of past perfect tense, let's see what would be the structure of sentences. Had is obviously used in the beginning of sentence, then use of subject, then addition of third form of verb, and after the addition of third form of verb, there is use of object. Had फिक्रे के शुरू में लगेगा, फिर सब्जेक्ट या प्रोनाउन लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और फिर फिक्रे के आखिर में जो है वो ऑब्जेक्ट लगेगा जिस पर सब्जेक्ट जो है वो अपना वर्क कंप्लीट करता है। To understand structure of sentences of past tense, past perfect tense, let's see few examples. क्या बच्चे स्कूल जा चुके हैं? Had children gone to school? क्या लड़कियां खाना पका चुकी हैं? Had girls cook food? क्या आलिया कपड़े धो चुकी है? Had आलिया washed clothes? क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी है? हैड पुलिस caught द थीफ? क्या